In the year 1885, the grandmother of Europe, Queen Victoria, rules as the Empress of India. And India itself is in the grips of the struggle for independence. The same year, another kind of revolution begins in the land of the Taj Mahal. Raja Balwant Singh of Avagarh Estate, Etah, Uttar Pradesh, establishes what would later go on to become the first college to award a postgraduate degree in agriculture, subsequently paving the way for the rest of the nation to encourage higher education in India. जो इस महाविद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य थे माननीय डॉक्टर आर.के. सिंह साहब, उनके समय में इस महाविद्यालय ने बहुत अधिक उन्नति की। उस समय देश आज़ादी हुआ था और उस समय हमारे यहाँ अत्यधिक उच्च स्तर का गुणवत्ता के साथ शोध कार्य भी हुए और विभिन्न क्षेत्रों में, और उसका ही प्रतिफल था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी और उनके साथ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय आइजनहावर जी ने भी इस बिचपुरी का और इस महाविद्यालय का भ्रमण किया था। 1977 में यूजीसी की टीम आई थी। उसने इस कॉलेज को एक विश्वविद्यालय के रूप में एक मान्यता प्रदान करी कि इसका स्वरूप जो है कॉलेज जरूर है, लेकिन इसका स्वरूप जो है रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय की भांति ही है। 1892 में राजा बलवंत सिंह जी जब आवागढ़ साम्राज्य के राजा बने तो उनके मन में ये विश्वास था कि किसी तरीके से इस राजपूत हॉस्टल को कॉलेज के रूप में परिवर्तित किया जाए। तो उन्होंने प्रयास करते हुए 1899 में इस राजपूत हॉस्टल को एक हाई स्कूल के रूप में हमारे को मान्यता प्राप्त हुई। वो लगातार इसमें प्रयास करते रहे कि इसको कॉलेज का स्वरूप कैसे प्रदान किया जाए। 1909 में वो स्वर्गवासी हुए, लेकिन उससे जस्ट एक दिन पहले, जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक 49 एकड़ ज़मीन जो है खंडारी फार्म पर खरीदी। खंडारी गांव जो कहलाता है इस समय, और वहाँ पर उस फार्म से जो आय होती थी वो जिसे आप कह सकते हैं कि कॉलेज के रूप में उन्होंने उसको प्रारंभ किया कि किस तरीके से इसका जो है विकास हो। धीरे धीरे राजपूत 1899 में जो हाई स्कूल बना था राजपूत, वो 1928 में आकर के इंटरमीडिएट कॉलेज में कन्वर्ट हुआ। Raja Balwant Singh purchased the present site of the campus, measuring 20 acres, for rupees 13,000. It was in 1928 that the institute opened an intermediate college and marked the beginning of a new era. In 1934, a young and dynamic man, Ram Karan Singh of Varanasi, was appointed principal. He was a restless spirit, forever looking for opportunities, and embarked on an ambitious plan of expansions and development that was to convert a small institution into a mini university. The foundation stone of the Jawahar Library was laid on November 19, 1959, and its inauguration was performed by K.L. Srimali, then Union Minister of Education, on March 24, 1961. हमारे यहाँ इस समय 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं ICAR के चल रहे हैं, जिसमें कॉस्ट एंड कल्टीवेशन स्कीम, ड्राईलैंड फार्मिंग, सलाइन वाटर, क्रॉपिंग पैटर्न। इसके अलावा हमारे पास 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, एक बिचपुरी में कार्य कर रहा है, एक आवागढ़ में काम कर रहा है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ धीरे धीरे विकास होता गया। उसके बाद डॉक्टर SN सिंह, डॉक्टर रोशन सिंह और डॉक्टर GS ठाकरे प्राचार्य के पद को सुशोभित करते रहे, और इसी के साथ साथ यह महाविद्यालय 7 फैकल्टीज़ में जो है कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से कार्य करते हुए आज हमारे यहाँ एक विशाल
वट वृक्ष के रूप में ये कॉलेज जो है परिवर्तित हो चुका है। आरबीएस के कॉलेज के एलुमनाई विभिन्न स्थानों पर पहुंच करके इस कॉलेज को गौरवान्वित किया है। उसमें डायरेक्टर जनरल एंड सेक्रेटरी ICAR यहाँ पर रहे हैं, प्रमुखों के इफ़को के चेयरमैन यहाँ पर रहे हैं, स्टूडेंट्स रहे हैं। विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में, विभिन्न निजी क्षेत्रों में उन्होंने महान उन्नति प्राप्त करी है। In 1967, the college was renamed Raja Balwant Singh College. This was because of the Charan Singh government of Uttar Pradesh that dictated that all educational institutes drop names that were indicative of caste. Dwight D. Eisenhower, the first US president to visit India, Sarojini Naidu, Rabindranath Tagore, and Prime Minister Jawaharlal Nehru all paid patronage and conducted lectures at RBS College, an institute that had risen from nothing to a paragon of education. Since the expansion of RBS Institute seemed to be the top priority of each successive generation of Raja Sahib, a series of grand steps were taken. Additional lands were procured, generous donations were made, and a way of life was entrenched. The institutions are run by the Balwant Educational Society with the district judge as the president and Raja Sahib Anirudh Pal Singh Ji as the vice president. He plays an active role along with his son Yuvraj Ambarish Pal Singh in the running of the various institutions. They reside at their ancestral home at the Fort Avagar and are also actively involved in the running of a heritage hotel, the Palace Belvedere in Nainital. Today, with 5 campuses spanning over 1,000 acres of land, RBS College is the oldest, largest and most prestigious college in all of Uttar Pradesh. RBS College has 7 faculties: Arts, Commerce, Education, Science, Agriculture, Engineering and Technology, and Management and Computer Application, and 5 campuses. 3 in Agra itself and 1 each in Bichburi and Avagar. Most recently, the Faculty of Engineering and Technology started in Bichburi campus in 1996 and Faculty of Management and Computer Education was founded in 1998 with BCA and BBA programs affiliated to Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. FMCA is located at Khandari Farm Campus and is approved by the All India Council for Technical Education, New Delhi, and Uttar Pradesh Technical University, Lucknow, for its MBA and MCA programs. In RBS College, we are running BBA BCA courses, and in this course, we try to teach the students, we try to update the students with latest knowledge, and our faculties make the efforts to bring out best from the students. The faculty is hand-selected from across the nation with the ideal in mind that only the most revered of professors become a part of the RBS legacy. The students are put through a grueling syllabus with an emphasis on being upstanding, contributing members of society to create exemplary pupils. And the board members are up to the highest standards of excellence and innovation in order to further the cause that Raja Balwant Singh started over a century ago. With over 500 PhDs and over 1,000 research papers published, it is no wonder that RBS has produced many leaders that help define their generation.
Today, RBS College stands as an example of the boundlessness of human spirit. A ragtag collection of houses and estates joined together to provide education was all Raja Balwant Singh could muster at the conception of this institute. It is humbling to look at the futuristic audacity of those that were involved in the inception of this institute, and awe-inspiring to see the unrelenting persistence of those that followed.